Today's class will discuss about the Docker commands, how we can execute Docker commands, how we can not use images, and how we can create containers. All these things, the basic things we'll know first, and then we'll go with advanced like the volumes, your own image creations, right? Inbuilt like user-defined image creations. All these things we'll see with all kind of like the Docker commands, right? So, मैं last class रे देखिଥିଲେ कौन install କରିଥିଲେ Docker engine, right? Docker host ଗୋଟେ ଆମେ install କରିଥିଲେ ତ ସେଠି ଆମେ କେମିତି Docker client through କେମିତି ଆମେ instruction ଦବା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ Docker object ସବୁ କଣ, right? Containers ଆଉ images ତ Docker actually କୋଉ type ର architecture follow କରୁଛି ନା client server architecture, right? So through client we can send request send କରିବା ମାନେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ command execute କରିବା ତ ସେଇ command କୁ docker daemon ବା host କଣ ତ यूज କରି वो output provide କରିବ docker version check କରିବା ପାଇଁ କଣ docker -hyphen version so 2.50 sorry 25.0.8 versions तो ଆମେ ଯଦି docker info यूज କରିବା तो कौन करियो ना क्लाइंट आउ सर्वर इंफॉर्मेशन शो करियो क्लाइंट आउ सर्वर तो सर्वर कहीं क्लाइंट इंफॉर्मेशन तो शो कला बट सर्वर इंफॉर्मेशन शो कला नहीं कौन पाई ना जेतु मो नॉर्मल यूजर यूज करिछि तो सेति पाई कोन सर्वर इंफॉर्मेशन एरर परमिशन डिनाइड तो मो एटी सुपर यूजर यूज कर दोछि जेतु डॉकर सर्वर कोन इंस्टॉल हेतला यूजिंग sudo राइट तो सेति आमे लास्ट टाइम राइट खाली कौन देखितले तो इंस्टॉलेशन रे हमें कौन यूज करथिले ए पर्टिकुलर यूजर मोड जो कमांड यूज करथिले एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड लिनक्स कमांड टू ऐड ec2-user into the docker group okay so मु एबे जदी यूज करबे आउथरे docker info see सर्वर इंफॉर्मेशन भी शो कला राइट जेतु मु बर्तन रूट रे अछि राइट क्लाइंट इंफॉर्मेशन वर्जन एतिके और कंप्लीट सर्वर डिटेल्स सर्वर कंप्लीट सर्वर इंफॉर्मेशंस राइट मेमोरी केते अछि सीपीयू केतेटा राइट कंप्लीट डिटेल्स शो करछ सर्वर डिटेल्स कर्नल वर्जन कोन ऑपरेटिंग सिस्टम कोन यूज हेछि राइट कंप्लीट डिटेल्स आर्किटेक्चर ओएस टाइप लाइनअप्स सब डिटेल्स देखौछ राइट तो बर्तमान आमे जानले कोन डॉकर रो इंफॉर्मेशंस केमते आमे जानिबा कमांड हला डॉकर इन्फो सेमती आमे इमेज विषय आमे काली कथा आइतले सो इमेज व्हाट इज इमेज इट इज a kind of template or recipe which holds the instructions right for an applications to run right तो जेतबे आमे कोन गोटे कंटेनर क्रिएट करिबा तो इमेज रो जहा भी इंस्ट्रक्शन सब थिबो बा टेम्पलेट रो जहा भी टेम्पलेट्स थिबो बेस्ड ऑन दैट आवर कंटेनर विल रन तो बर्तमान हम इमेज ऊपर काम करबा तो इमेज चेक करबा पय कोन कमांड हम यूज करबा डॉकर ओके तापरे ता पूर्व में तुमको बतै दोची डॉकर रो कमांड तमे केमती यूज करिवो देखो बहुत सिंपल अछि तमे दे डॉकर हेल्प यूज करिवो डॉकर हेल्प तो सेठी कौन दोछ ना कंप्लीट कमांड लिस्ट दे दोछ लिस्ट ऑफ कमांड्स ये सब कंप्लीट लिस्ट ऑफ कमांड्स राइट तो किछि कैटेगरी से डिवाइड करछि जेमति गेला कॉमन कमांड्स जो कमांड्स की हमें कॉमनली यूज करिबा का सहित ना मैनेजमेंट कमांड सहित किछि मैनेजमेंट कमांड देछि जो मैनेजमेंट कमांड हमें फर्स्ट यूज करिबा टू मैनेज द डॉकर थिंग्स राइट तो आछि कोन तापे इमेज आसुछि गोटे जोटे कि हम इमेज मैनेज करिबा पे टू मैनेज इमेजेस राइट सेमती आसुछि कोन कंटेनर टू मैनेज द containers network to manage the networks plugins volumes to manage the volumes to manage the system so different आसुछि ओके तो एटी बिल्ड एक्स
गोटे कमांड आसुची जोटा कि डॉकर बिल्ड करबा पई ओके बट वी कैन स्टिल यूज इमेज मैनेजमेंट कमांड build the docker also ओके तो बर्तमान सपोज मु इमेज मैनेजमेंट कमांड यूज करिवि ओके देखो अदर कंप्लीट कमांड्स लिस्ट दीजिए कौन कौन कमांड्स हम यूज करि परिबा प्रत्येक मैनेजमेंट कमांड डिफरेंट डिफरेंट कमांड सब थिबो तो बर्तमान सपोज मु इमेज मैनेजमेंट कमांड यूज करिया को जाउची राइट हाउ कैन आई यूज इट देखो एटा मु तुमको बतौची बर्तमान तमे केमिति यूज करिवो राइट सबु जगह तो कमांड्स हमें मन रखि परिबानी जदि भी किछि डाउट असला किछि भी कमांड तमे एग्जीक्यूट बा भूली जाइछ तमे कोन करिवो सपोज डॉकर रो जो डॉकर इमेज मैनेजमेंट कमांड रो सब कमांड्स कोन मु जानिनी तो मु इमेज हेल्प मारबी तो मते कोन करिवो से कंप्लीटली डॉकर इमेज सहित कौन सब कमांड हमें पास करिवा कमांड लिस्ट कंप्लीट देखि दोछि तो डॉकर इमेज हमें यूज करबा ता सहित हमें कौन यूज करता बिल्ड हिस्ट्री इंपोर्ट एलएस राइट ये सब डिटेल्स हमें धीरे धीरे गोटे गोटे कमांड सब जानिबा और सिखिबा ओके तो वर्तमान हमें कौन देखो कि मते कह मुझे तो एई कमांड ता यूज करूची राइट एटा वर्तमान मो पई कोन होबो क्लाइंट राइट CLI कमांड लाइन इंटरफेस रे मु कोन करची गोटे कमांड एग्जीक्यूट करची राइट मु कहता सपोज डॉकर इमेज ls मारली देखो ls कोन करिवो एटी डॉकर इमेज कमांड कमांड जगह मु देली ls तो ls कोन करिवो लिस्ट इमेजेस तो लिस्ट इमेजेस माने कोठी ना डॉकर होस्ट रे जो इमेज अछि से ताको लिस्ट करिवो राइट तो एटी कोन कला ना किछ इमेज नाही there is no images available किछि इमेज नाही राइट तो हम जदि आर्किटेक्चर हमें जदि देखिबा राइट लास्ट क्लास में जो आर्किटेक्चर ऊपर बुझेतली तो ये जो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर कोन कला ना इटाला डॉकर होस्ट राइट तो सेठी डॉकर होस्ट जो इमेज होची डॉकर होस्ट रे so यदि डॉकर इमेज कोन क्लाइंट रे कोन कला डॉकर इमेज ls एग्जीक्यूट कला डॉकर इमेज ls क्लाइंट रो एग्जीक्यूट हला डॉकर होस्ट से चेक करिवो इमेज कोन अछि से कोन कला इमेज किछि नै आदा ओके तो वर्तमान होस्ट रे देयर इज नथिंग नो इमेजेस आदा तो हमें यदि इमेज आनिबा को चाहू छे बा क्रिएट कर कोन करि परिबा हमें ना कोन ना रजिस्ट्री रो इमेज को हमें पुल करि परिबा तो रजिस्ट्री कोन व्हाट इज द डॉकर रजिस्ट्री इट इज a binary repository which stores the binary objects binary files so what is the binary files here so the docker images right whatever the docker images it creates those are the binary files so that will be stored in the registry so in this case docker is having its own registry system that's called docker hub that's called docker hub okay तो हमें कौन यूज करबा hub.docker.com हम जब यूज करबा इट हला कोन तारो ऑफिशियल रजिस्ट्री वेबसाइट ओके hub.docker.com तो इट हला docker hub तो तम मानू कौन करिया पड़िबा नेटी डॉकर हब रे रजिस्टर करिकरी तमरो अकाउंट गोटे क्रिएट करू एटला कोन बोथ इट हैज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट रजिस्ट्री सिस्टम राइट रिपोजिटरी सिस्टम सिमिलरली राइट हमें गिटहब रे कौन करछे गिटहब गोटे कोन सोर्स कोड मैनेजमेंट रिपोजिटरी सिस्टम SCM रिपोजिटरी सिस्टम तो सेठी कोन होछ ना गिटहब हैज आल्सो both open source as well as enterprise version it has right तो एटी हमहु GitHub रे कोन दोची both public और private repository create करिया पे दोची similarly docker hub रे भी हमें private और public repository बा public image private images हमें store करि पारी ओके तो ता पे तुमको साइन अप करिया पड़िबो इट्स वेरी इजी टू साइन अप सो तमे जरा अकाउंट नाही GitHub docker hub रे तो से कोन करिवो फर्स्ट साइन अप करिवो तो इटा हला गोटे कोन
रेजिस्ट्री हमको दरकार गोटे रेपोजिटरी जोटी कि हमरा इमेज आमे स्टोर करी रखिबा ओके तो ता पई मु साइन इन करछि मोर ऑलरेडी अकाउंट अछि तो तमन काम होला तमे वर्तमान अकाउंट रजिस्टर करी ओके सो दिस इज docker for Ranjit okay so एटी देखो मो जो रेपोजिटरी सिस्टम राइट ए रेपोजिटरी मोर पर्टिकुलर इमेजेस सब अच्छी 11टा इमेज अच्छी जोटा कि मु 5 years ago 4 years ago 3 years ago ये सब पब्लिक हिसाब रे विजिबिलिटी पब्लिक रे कोन ऐड करथि राइट तो वर्तमान ये सब इमेजेस माउ यूज करूनी जेटा पब्लिकली जेतु मु रखि जे भी चाहिबो ये इमेज को डाउनलोड करके यूज करि पारिबो तो मु बते देबी केमति तमे डाउनलोड कर यूज करिवो ओके तो वर्तमान लेट मी लॉग इन टू माय न्यू अकाउंट अदर अकाउंट Ranjit's right okay so ये अकाउंट रे भी किछ इमेजेस अछि 2 years 9 months ago किछ इमेजेस अछि तो तमे फर्स्ट कौन करिवो वर्तमान तमे रजिस्ट्री साइन अप करिवो साइन अप करिकरी एटा अकाउंट क्रिएट करिवो राइट ता पूर्वरु मु तुमको बतै दोछि एटा त हला कोन निजे यूजर डिफाइंड इमेज बा जो इमेज हमें बिल्ड करछि ताकि मु स्टोर कर रखि छी पर तमे यदि पब्लिक इमेज किछि सर्च करिया पई चाहू छ सपोज मु गोटे इमेज चाहू छी कोन अपाची सर्वर राइट सपोज एचटीटीपी इमेज मु खोजु छी तो मते सर्च करिवि एटी कोन 10000 रिजल्ट्स फॉर एचटीटीपी 10000 रिजल्ट्स तार जो कंटेंट टाइप अछि ट्रस्टेड कंटेंट रू देखो डॉकर ऑफिशियल इमेज जोटा तमे ए पर्टिकुलर सिंबल्स आसुची आइकन आसुची राइट यू कैन सी दीज आर द डॉकर ऑफिशियल इमेज हाउ वेरीफाइड पब्लिशर जे पब्लिश करछि दैट इज वेरीफाइड एक्चुअली से वेरीफाइड देन तमे एटा यूज कर पारि किछि जण स्पोंसर्ड करछन्ती स्पोंसर्ड डॉकर स्पोंसर्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओएसएस these are images published and maintained by open source project so we can use open source sponsored oasis open source project how जो बाकी images रहिला xyz जे भी चाहिबो पब्लिकली ताको अपलोड करि परिबो कोडी डॉकर हब रे जेमति कि मु अपलोड करछि डॉकर हब रे राइट तो से इमेज को जे चाहिबो यूज करिया पई से कोन डायरेक्टली कौन यदि मुझे सर्च करी सपोज रंजीत फॉर सपोज सॉरी डॉकर फॉर रंजीत इतला राइट डॉकर फॉर रंजीत ठीक है देखो ये सब इमेजेस पड़े आसला राइट तमे भी चाहिए यदि सर्च करियो कंप्लीट इमेज तमे जे पर्टिकुलर इमेज चाहू छ यूज करिया पे तने यूज कर पारे तो मु एबे देखो तुम इमेजेस हमें केमिति यूज करियो ओके तो सपोज मु Apache image HTTPD नउची आउ जेतुडा ऑफिशियल इमेज राइट यू सिलेक्ट करछ ऑफिशियल एटा केमिति यूज करबी ना क्लिक कले हमें इमेजेस विषय जानि परिबा सो वी कैन गेट मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस अबाउट द इमेज सो हमें इमेज को केमिति यूज करबे तार कमांड यूज करबे docker pull httpd तो से दे दोची को टाइप को वेज रे हमें यूज करि परिबा त हमें यूज करे जस्ट कॉपी कर दे लेटा डॉकर पुल मुझे डायरेक्टली कौन डॉकर पुल एचटीटीपी मारी पारि से पुल करि परिबो नॉल जदि हमें मैनेजमेंट कमांड यूज करिया डॉकर इमेज तापर पुल यूज करे डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द रजिस्ट्री जेतु एचटीटीपी कौन गोटे पब्लिक इमेज तो से डायरेक्टली विदाउट आस्किंग फॉर एनी क्रेडेंशियल्स पासवर्ड डाउनलोड कर देबा पुल करी राइट
सो मुझे कौन कर मैनेजमेंट तुम डायरेक्टली डॉकर पुल यूज कर पारिबो बट मुझे कौन कर मैनेजमेंट कमांड इमेज जेहेतु मु इमेज ऊपर बर्तमान काम करुच्ची तो मैनेज करिया चाहूँगी काम करुच्ची तो मु इमेज यूज कली डॉकर इमेज पुल आउ इमेज ना सी कौन इमेज आमर क्रिएट राइट इमेज आमर नॉट क्रिएट इट हला आमर कौन डाउनलोड राइट इट पुल्ड फ्रॉम द रजिस्ट्री सो डाउनलोडेड न्यूअर इमेज द लेटेस्ट आ गोटे मन रखी था जोटा बहुत इंपोर्टेंट आम जो डॉकर इमेज गोटे डाउनलोड करवा पुल करवा रजिस्ट्री आम यदि किसी टैग स्पेसिफाई करी नथिबा खाली इमेज नाटा दे देथिबा then what it will do it will pull the latest version it will pull the latest version or download the latest version of the image सेठी देखि पारे तमे एठी कोन से करछि ना डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर http://latest तमे यदि किछि स्पेसिफिक वर्जन चाहूछ देन तमे कोलन वर्जन नाटा बा टैग ना देले सेही पर्टिकुलर वर्जन रो इमेज से डाउनलोड कर तुमको बता देवी केमती करिवे ओके तो वर्तमान हमर कोन इमेज डाउनलोड हेगला तो डाउनलोड हेकरी रहिला कोठी ना डॉकर होस्ट रे सर्वर रे वर्तमान रहिला राइट मोदी चेक करबी इमेज डाउनलोड हेची कोन इमेज ls मारली देखो आगुर किछि नथला वर्तमान कोन गोटे इमेज हमें हम सर्वर रे हम मशीन रे राइट डॉकर मशीन रे डॉकर सर्वर रे हम गोटे इमेज फाइल http images 148 MB 4 months ago it was created the tag is the latest versions हमें किसी स्पेसिफाई करनथले रिमेंबर एटा गोटे क्वेश्चंस भी आसी पारे very basic questions like fresher level questions एटा गोटे जदि हमें गोटे इमेज without giving any tag will use then what will happen what it will do it will use the latest version so basically तमे तो इमेज रे काम करूछो be careful what you are going to use it because most of the time तुमको किछि required specific version रे काम करियो पड़िबो ना कि latest version right बते दे तुम केमती करियो तमे तो हमर वर्तमान गोटे इमेज मु चाहूची सपोज किछि स्पेसिफिक वर्जन यूज करिया पई चाहूची तुम केमिति जानिबी को वर्जन्स मते दरकार राइट सपोज तुम गोटे पर्टिकुलर वर्जन्स दरकार आमे जदी सही पर्टिकुलर इमेज को जीबा ई इमेज सेक्शन रे आर ओवरव्यू देखिबो तमे अपाची डॉकर ऑफिशियल इमेज को जीबो httpd एटा कोन गोटे अपाची http सर्वर प्रोजेक्ट राइट तो एठी जीबो तुमरो कंप्लीट टैग इंफॉर्मेशन अछि कोन कोन सपोर्टेड टैग एठी भी हम जदी क्लिक करिवा कंप्लीट लिस्ट ऑफ टैग्स देखो Alpine 3.22 Alpine right ISO versions 2.4.63 Alpine is सब complete list of tags एते सारा टैग अछि right एते सारा टैग अछि so total tags हम देखिबा more than 100 tags are there okay more than 100 tags are there so हमें कोन करिबा एटी सर्च कर फिल्टर कर परिबा को टैग तुमको दरकार बट ये जो इमेज तार विषय तुम जानिया चाहूछ देन यू हैव टू गो डाउन एंड सी पूरा डिटेल्स से माने बतैछंती अपाची httpd सर्वर कोन एंड हाउ टू यूज दिस इमेज ता केमती यूज करिवो राइट तार विषय कंप्लीट डिटेल्स रे से देछ कंप्लीट डिटेल्स रे देछ ओके आ विषय हमें धीरे धीरे जेतबे हमें डॉकर बेसी डेप्थली जानिबा राइट ताबिसरे अंतर में आप जहाँ भी अच्छी इन्फॉर्मेशन ताबिसरे में डिस्कशन करना ओके तो बर्तमान मु कोन करले हमें गोटे इमेज पुल करले बा डाउनलोड करी गेली हम सिस्टम ले तो मु धरो किछि स्पेसिफिक वर्जन्स चाहूची देन मु जेमति कहले हमें से पर्टिकुलर टैग को जीवा तमर जो टैग रो रिक्वायरमेंट थिबो सपोज हमर रिक्वायरमेंट अछि 2.4.63 एपन अल्पाइन ए वर्जन हमर रिक्वायरमेंट अछि तो मु कोन करिबि ना से जगह रे पुल httpd कोलन राइट कन्वर्जन अछि 2.4.63 हाइफन अल्पाइन
Alpine, right? तो मते ये पर्टिकुलर वर्जन रो Apache इमेज दरकार है तो मुझे कौन करे बेटे एंटर सब कौन करियो डायरेक्टली कनेक्ट करियो कोडी registry को GitHub Docker sorry not GitHub Docker Hub को then it will pull the entire image see downloaded तो मुझे भी जल्दी Docker image ls मारिया see data images बर्तन हम पाइगले गोटे रहिला Docker latest versions httpd latest version tag आगोडेला 2.1 जो पर्टिकुलर वर्जन चालू दरकार तो ये आम देखिले कौन रेपोजिटरी कौन आम आनले httpd टैग कौन देइछे ता सहित इमेज आईडी ए आईडी जो इमेज आईडी है यूनिक अल्फा न्यूमेरिकल यूनिक रहिबो तापर केबे कौन क्रिएशंस तार साइज केते गोटे इमेज रो साइज कौन सब राइट जेतो गोटे इमेज गोटे बाइनरी फाइल एंड इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस राइट जहाँ भी इंफॉर्मेशंस दरकार गोटे एप्लीकेशंस को रन हवा पई तार dependencies binaries libraries everything will be there in the images सेति पई इमेज रो साइज बेले बेले बॉडी जाय साइज केमती बढ़िबो ना जदी हमें if we are giving something like if we are adding some DLL or some binaries which is already in higher in size right suppose 300 MB रो गोटे हमें बाइनरी फाइल हम इमेज रे ऐड करूचे तो इमेज रो जहाँ भी साइज थो ता सहित एक्स्ट्रा बाइनरी गोटे आम ऐड करूचे बा लाइब्रेरी गोटे ऐड करूचे तार साइज ऐड हेगी कंप्लीट इमेज रो होइबो हम बते हमें तो निजे इमेज हमें क्रिएट करबा राइट डॉकर इमेज क्रिएट करबा से टाइम रे हम बते देबी हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन इमेज एंड विल सी हाउ द साइजेस गेट्स डिफर्ड ओके फाइन तो हमें देखले एटी कोन सिंपल इमेज पुलिंग करके हमें देखिले बट ए इमेज जो हमें कंटेनर केमती क्रिएट करबा हाउ वी कैन क्रिएट द कंटेनर्स ओके तो तापे हमें कोन करबा यूज करबा docker container management command right कोन करबी docker container जदी हेल्प मारिबी से मते कमांड लिस्ट देखे दो राइट देखो एटी इतनी सारा कमांड हमरो यूज करिया पड़ेगा जहाँ जहाँ तुमको दरकार सही हिसाब रे ये सारा कमांड तमें यूज करियो प्राय कमांड हमें यूज करियो मैक्सिमम कमांड हमें यूज करियो बाकी तमें प्रैक्टिस करियो ओके बहुत इजी गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड डोंट गेट नर्वस कमांड पूरा मने रहि जिवो तमरो तमें जस्ट 1 वीक बळे प्रैक्टिस करियो बाकी सब जगह कमांड तमर मन रहि जिवो ओके तो मैं देखली डॉकर कंटेनर तो मते कौन करार अछि सपोज मो रिक्वायरमेंट लो मते लिस्ट करार अछि कोन कंटेनर्स तो मु कोन करबी एलएस यूज करबी लिस्ट कंटेनर्स राइट देखो डॉकर जेबे मार्केट को आसिला सेबे से टाइम रे डॉकर गोटे डिफरेंट कमांड्स दिला जमा कंफ्यूज हबनी कारण बाकी जो यूट्यूब वीडियोस बा तमे जोठी भी चेष्टा करछो देखिबा पई से जो कमांड सब यूज करूथिबे दैट कमांड आल्सो स्टिल अवेलेबल से कमांड एबे भी एग्जीक्यूट होउची ओके जमा कंफ्यूज हबनी जे सर हम ए कमांड बतेथिले बट से जो पुराना कमांड एबे भी चालूची जेमति कि हमें देखिथिले कोन डॉकर इमेज एलएस मारथिले राइट बोली ये भी डॉकर इमेज एलएस न मारी कि खाली डॉकर एलएस मारीबी डॉकर सॉरी एला कौन थिला ओके जदी खाली डॉकर इमेजेस मारीबी ओके जदी डॉकर इमेजेस मारी से कोन करे देखो मु एठी मारतली कोन डॉकर इमेज एलएस मत देखेला बट मन डॉकर इमेजेस जदी मार देली से मसो कला जहां भी इमेजेस अछि एरा कोन पूर्ण कमांड्स द ओल्ड वे ऑफ राइटिंग द डॉकर कमांड्स and this is the new way of writing the docker command if you see my old videos YouTube videos I was using these commands and बहुत सारा वीडियोस भी तम पाइयो पुराना कमांड से बट स्टिल नुवा कमांड भी बहुत यूज करछनी राइट तो हमें जे नुवा कमांड्स जो डॉक्यूमेंट्स जो वर्जन्स रहछन से हिसाब रे चलीबा
फाइन तो एबे आमे कोन जानले डॉकर इमेज विषय तो आमे डॉकर कंटेनर पर जानिबे तापे आमे कोन यूज करे डॉकर कंटेनर मैनेजमेंट कमांड हाउ मुझे लिस्ट करी कौन कौन कंटेनर अच्छी से मत देखेबो राइट कंटेनर एलएस जेतो हमर किछि कंटेनर हमें क्रिएट करिने तो कंटेनर केमती क्रिएट हबो सो व्हाट इज द कंटेनर काली क्लास में पढ़ितो व्हाट इज द कंटेनर It's kind of storage. kind of not storage Instance. I mean, it's the instance of an object not storage it's the instance of an object हमें कहि परिबा कोन it's the it's from instance. object we can create the container like the subset right so container type of virtual which created from the instructions found in within the docker image so it is the running instance of the docker image it consists of the entire package required this okay so it's the instance of the image so what is image image is the type of recipe or template which can be used to create docker containers तो आम इमेज को लेकर ही कंटेनर क्रिएट करवा तो से आम कौन इमेज एटी देखीदे आम इमेज बर्तमान अच्छी जदि भी आमर एटी इमेज नहीं हाउ इट विल वर्क सी ए डिटेल्स भल भाव बुझ तबे कौन आमर कंटेनर नहीं मु चाहूँ गोटे कंटेनर क्रिएट करी ए पर्टिकुलर इमेज रो तो मु कौन करी तापे डॉकर कंटेनर रन कमांड हमें रन करवा देखो रन कमांड क्रिएट एंड रन ए न्यू कंटेनर फ्रॉम एन इमेज हमें कौन करवा रन कमांड यूज करवा क्रिएट एंड रन ए न्यू कंटेनर फ्रॉम एन इमेज सो मैं कौन कर कंटेनर रन कौन रन करी ए पर्टिकुलर इमेज आइदर मु इमेज आईडी दे पारिबी नले इमेज ना देबी ओके सपोज मु इमेज ना दे दो httpd ओके तो बाय डिफॉल्ट तमे जदी किछि ऑप्शन एटी बा किछि पैरामीटर पास करूनो तो कोन हबो एटी इंटरैक्टिव मोड रे रन हबो तो मैं यदि कौन कली डॉकर कंटेनर रन httpd मारली तो से को वर्जन httpd को वर्जन अपाची नबो httpd नबो को वर्जन httpd नबो latest first latest one right जेतु by default if a question ता मन रखिता by default if we don't specify any tag or version the docker will take the latest tag always okay तो मैं यदि run httpd मारछि आउ कोन होछ ना जदि हमें किछि आर्गुमेंट भी पास करूने रन परे से कोन हबो से इंटरैक्टिव मोड रे रन हबो देखो वाला इंटरैक्टिव मोड रे रन हे गला तो एबे बर्तन हम कर्सर कोन हम टर्मिनल कोन कनेक्टेड हे गला ए पर्टिकुलर सर्विस हमर इमेज ए पर्टिकुलर इमेज रो इंटरैक्टिव मोड रे कनेक्ट है मोर या कुछ टर्मिनेट करिया पे चाहू कंट्रोल सी मार देली से कोन हला ए पर्टिकुलर सिग्नल गोटे दला कॉड सिक टर्म शटिंग डाउन टर्मिनेशन सिग्नल देली मु कंट्रोल सी प्रेस कर देली तो से कोन हला एटू कटिकले एबे देखिबा जदि हम कंटेनर क्रिएट कोन होय से कंटेनर टा कोन जेतो हम कंटेनर सहित अटैच थिले इंटरैक्टिवली तो हम कंट्रोल सी माली टर्मिनेट हे गला पर कंटेनर कोन बर्तमान की ले जाइथिबो राइट तो मु बर्तमान चेक करबी डॉकर कंटेनर एलएस किछि देखोनी आ गोटे मन रखता ए जो कमांड डॉकर कंटेनर एलएस केवल रनिंग कंटेनर इंफॉर्मेशन शो करियो केवल रनिंग कंटेनर इंफॉर्मेशंस
बट ए केस रे हमर कोन हैला हमें कंटेनर तो रन कले बट मु कंट्रोल सी प्रेस करी ताकू टर्मिनेट कर देली ता माने कोन हैला एठी कंटेनर रन होउनी एठी टर्मिनेट हे जाईची तो सेति पय एठी शो करूनी तो मु जदी चाहू छी सब कंटेनर शो करिवा पय इंक्लूडिंग रनिंग देन मु हाइफन ए ऑप्शन गोटे देबी जोटा कि से शो करिवो सब कंटेनर देखो एठी गोटे कंटेनर बटन शो कला राइट मु एटा गुटिके मिनिमम छोटो कर दोची जोटा कि हमको सब डिटेल्स रे हमें जानि परिबा ओके तो ठीक है देख लो डॉकर कंटेनर मु आ विषय कंप्लीट डिटेल्स बुझे दोची टिक्की निकी करी पूरा डॉकर रो बुझे देबी तुम कोठी भी इन्फॉर्मेशंस पाइबनी हैला तुम सब दिन सब बुझहा बुझौची ताको मने रखो और प्रैक्टिस करो और सेटा क्वेश्चन रे ही आसीबो तुमको जदी बेसिक क्वेश्चंस पचारजन देन डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चंस ओके तो मेठी कोन करी डॉकर कंटेनर ls -a मींस ऑल कंटेनर इंक्लूडिंग डेड कंटेनर बाय एग्जिटेड कंटेनर ओके तो एठी देखला हमर कंटेनर आईडी एटा भी गोटे यूनिक आईडी गोटे अल्फा न्यूमेरिक आईडी दबो कोन इमेज यूज हेची इमेज इन्फॉर्मेशन गोटे कंटेनर क्रिएट करे में कंटेनर आईडी देला कोन इमेज यूज हेची को कमांड एग्जीक्यूट हेची माने इमेज रे भी गोटे कमांड अछि ना हमें तले रन करिवा सेटा इमेज रो जहा रेसिपी बा टेम्पलेट अछि सेटा एग्जीक्यूट हेची कोन कमांड एग्जीक्यूट हेची एटा देखैछि केतबळे क्रिएट हेतला अबाउट ए मिनिट एगो इट वाज क्रिएटेड तर वर्तमान स्टेटस कोन ना एग्जिटेड कोट किछि नाही इमेज ना एठी कोन हे गेला ना हंग्री हाइफन आर रोड्स राइट हंग्री हाइफन रोड्स कोन हेला एठी ए जो नेम ता हमें तो देइने ना से कोन हेला ना डॉकर तार ऑटोमेटिकली रैंडमली किछि गोटे ना कंटेनर को दे दोछ माने रखि दो if you don't specify a name while creating the container the docker itself will provide a random name to it okay मुझे दी आउ थरे सेमती सेही कमांड को एग्जीक्यूट करिवि ओके एंटर कंट्रोल सी टर्मिनेट कर देली राइट एबे देखिबा आउ थरे केतरा बर्तन केतरा थिबो कंटेनर दीटा राइट देखो 13 seconds ago created exited second 7 seconds exited fine दीटा कंटेनर आईडी हमर क्रिएट हे गेला आर ना देखो आगुर थिला हंग्री रोड्स एबे आसी गेला इंस्पायरिंग एम क्लीन नाटा कोन ऑटोमेटिक तमे जत्ते थरो बिना ना जदी देई कि तमे रन करिवो देन कोन बन से ऑटोमेटिकली तुम गोटे ना दे दबो राइट आउ गोटे दिन जहाँ भी सब इंपोर्टेंस बतौछ तुम देखो मु चाहि जदी किछि ना दबा भाई देन मु कोन करि परिबे ठी रन हाइफन नेम गोटे ना दे दोछि सपोज वेब सर्वर गोटे ना दे देली वेब सर्वर हिट एंटर ओके रन हला एटा कोन बाय डिफॉल्ट कोन होची इंटरैक्टिव मोड रे होची मु कंट्रोल सी माइले कोन एग्जिट हे जाउची बट नॉर्मली हमें चाहिबानी जे हम कंटेनर टा एग्जिट हो ता पय बते देई त केमती करिवो तो वर्तमान हमें गोटे कोन ना देई देले राइट हाइफन नेम वेब सर्वर से कोन कले एबे जे हमें चेक करिबा एबे केदरा आ गोटे कंटेनर आड हेतियो तीनटा कंटेनर राइट देखो तीनटा कंटेनर बट हम ए कंटेनर रो ना रहि गला गोटे वेब सर्वर वर्तमान हमें कोन एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन कले गोटे ना कंटेनर ना तम कंटेनर ना वेब सर्वर हे गला जदी न दबा ना ताले कोन रैंडमली डॉकर गोटे मन को मन प्रोवाइड कर दो ओके तो आमे जानिले जेतबेले हम कंटेनर गोटे क्रिएट करूचे तो से कंटेनर रो कोन होची बाय डिफॉल्ट कोन होची इंटरैक्टिव मोड रे रन होची आ तमे जदी चाहू छ इंटरैक्टिव मोड रे रन भी करिवा पाई बाय डिफॉल्ट इंटरैक्टिव आ जो चाहू तार हाइफन आईटी ऑप्शंस दे दबो हाइफन आईटी एटा भी इंटरैक्टिव मोड रे रन हो आ तमे चाहू छ जदी कोन बैकएंड रे रन करिया पाई इन ए डिटैच्ड मोड तमे ऑप्शन दबो हाइफन डी run hyphen d. So what will happen? It will run the container in a detached mode.
माने से टर्मिनाल सहित कनेक्शन हबन ओके तो मुझे यदि एग्जीक्यूट करी लेट्स सी एटा फेल हैला कौन पाई फेल हैला द डॉकर कंटेनर वेब सर्वर इज ऑलरेडी इन यूज बाय कंटेनर तो आमे कोन वेब सर्वर नाटा ऑलरेडी कंटेनर को गोटे असाइन कराई से जानी करी देली तो फेल हो तुम बतैया तो ये कौन है वेब सर्वर आम जो यूज कले ऑलरेडी आमर वेब सर्वर जो नाटा आम देचे सेटा दैट इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड बाय ए कंटेनर तो से आम सेम ना आउ दे परिबा नाही द नेम्स आर यूनिक द नेम्स आर यूनिक सो यू कैन नॉट गिव द सेम नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंटेनर तो ताकू आम नुआ कंटेनर क्रिएट करने हम कौन करिया पड़ो डिफरेंट ना देदवा सर्वर 1 सपोज मु देली वेब सर्वर 1 आइटा मु हाइपेन डी जो देली एटा कोन हो ना डिटैच मोड रे रन हबो आ हमकू एठी कोन हमरो सब इंटरैक्टिव मोड रे कनेक्ट हे के हम कंट्रोल से प्रेस करी टर्मिनेट करिया पड़ुथला राइट तो मैं एठी कोन कली हाइपेन डी ऑप्शन इन डिटैच मोड रे रन करी सी एबे आउ तो कनेक्ट हेलानी एबे हमर प्रॉम्प्ट को पळे आसिला सेल प्रॉम्प्ट को राइट बट एटी गोटे कोन अल्फा न्यूमेरिक बहुत बिग कंटेनर आईडी शो कर राइट तो हमें जदि एबे कंटेनर डॉकर कंटेनर ls -a मारबा सी देखो डिफरेंस जान लो सेतला हमें कंट्रोल सी मारी एग्जिट होतले सेति पे सब जगह कंटेनर हमरा एग्जिट हे गेला बट एठी केवल गोटे कंटेनर रन होची वेब सर्वर 1 ऑफ 20 सेकेंड्स राइट स्टेटस इज ऑफ 20 सेकेंड्स इट्स नॉट एग्जिटेड ऑफ एबे भी चेक करले से ऑफ थीबो देखो ऑफ 43 सेकेंड्स पोर्ट 80 सो हमें जानी छे अपाची सर्वर डिफॉल्ट पोर्ट कोन 80 राइट सो से शो करची त पोर्ट 80 जेटो एटा गोटे वेब सर्वर मु केवल स्टार्टिंग कली वेब सर्वर इमेज रा देखेली बट आम आउरी इमेज अलग इमेज विषय भी डिस्कशन करवा तो ये 80-TCP देखेला राइट यस कौन कंटेनर टा एबे भी देखो up about a minute still up until unless you stop it or terminate it it will be up fine मुझे यदि ls-a न मारिबी तो कौन हो बेठी केवल रनिंग कंटेनर जो कंटेनर टा रन होची से इंफॉर्मेशन देखेला बाकी कंटेनर देखो फाइन तापरे मु चाहूची जदि ए कंटेनर को कोन स्टॉप करिवा पई तो मु कोन करबी कंटेनर स्टॉप आइदर तमे कंटेनर आईडी देई परिबो नले ता नाटा दे परिबो तो मु कंटेनर आईडी दे देली कंटेनर आईडी होची यूनिक ना भी यूनिक ओके तो जे कोनसी गोटे दे परिबो आइदर नेम और कंटेनर आईडी स्टॉप मन रखता कंटेनर स्टॉप टू स्टॉप द कंटेनर ये कंटेनर टा वर्तमान स्टॉप हे जो राइट तो मु देबे कंटेनर चेक करिवि ls-a देखो एटा भी एग्जिटेड वेब सर्वर 1 भी एग्जिट हे गला ठीक स्टॉप कर देली ओके तो ये सब कंटेनर देखो डिफरेंट डिफरेंट आईडी यूनिक आईडीज राइट डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आल्सो तो इतने सारा कंटेनर अच्छे मु चाहूनी सब रखिया पई तो मु कंटेनर को सपोज डिलीट करिवा पई रिमूव करिया पई कोन कमांड यूज करबी डॉकर कंटेनर ओके rm docker container rm then container id नाले कंटेनर नेम तो मु कंटेनर आईडी देबी डिलीट हे गला सेमथि आउटे कंटेनर आईडी देबी डिलीट हे गला तो एटा कोन जदी हमरो बहुत सारा कंटेनर अछि तो हमें कौन करिया हम सिंगल सिंगल तो डिलीट करिया नहीं ना तो तापे अलग कमांड्स अछि जोटा कि हमें यूज करि परिबा कोन हां prune गोटे कमांड अछि docker container हेल्प मारछि हम देखे दुछि एटे देखो prune बोली गोटे कमांड अछि पड़ला
prune. Remove all stopped containers. Remove all stopped container. जो भी कंटेनर स्टॉप अच्छी ताको रिमूव करया पे कोन docker container prune. तो मैं यदि हमें भी चेक करिया हमर केतरा का आउ अच्छी docker container ls-a तो दुईटा अच्छी मुझे दुईटा को गोटे गोटे न करी दुईटा का एकात्र उड़िया देबा चाहू छी डिलीट करया पे तो मैं prune मारी यस देखो दुईटा को कंटेनर डिलीट हो गला तबे देखिए चेक करिया कौन कंटेनर अच्छी नथिंग ऑल डिलीटेड बुझी पारलो बहुत सारा कमांड हमें जानले स्टॉप कमांड जानले राइट stop to stop the container start to start the container okay fine तो एटा हमें देखिले कोन गोटे अपाची वेब सर्वर विषय स्टार्टिंग टू देखि देले बट अरे बहुत सारा कंटेनर्स अछि जोटा के हमें यूज कर पीबा गोटे कंटेनर जेमती हला देखो जहां भी तमे कंटेनर इमेज खोजिबो से कारण हमें कंटेनर कोडू क्रिएट करबा इमेज रु ही कंटेनर क्रिएट करबा राइट मु धर सपोज हमें एडी मु खोजिबी टॉमकैट image right tomcat image हमारे ऑफिशियल मिल जो देखो ऑफिशियल इमेज दिस इज द ऑफिशियल इमेज तो सेमती कौन सी डाटाबेस इमेज बा डाटाबेस कंटेनर क्रिएट करा बिन यदि MySQL खोजिबी MySQL रे भी देखो MySQL रे भी मिल गला इमेज तो हमें ये इमेज यूज कर परिबा राइट सेमती तमे जे कोन सी इमेज खोजुछ धर हम गोटे किछि लाइनक्स इमेज उबुंटू रो खोजुछि उबुंटू इमेज उबुंटू लाइनक्स मशीन भी हमें इमेज यूज करि परिबा राइट यदि उबुंटू रो खोजि देखो उबुंटू ऑफिशियल इमेज सेंटोस तमे जहां भी लिनक्स खोजुछ सपोज अमेज़न लिनक्स देखियो अछि ना नहीं अमेज़न लिनक्स देखो अमेज़न लिनक्स रो भी ऑफिशियल इमेज अछि मु चाहूँ यदि अमेज़न लिनक्स गोटे क्रिएट करया पे गोटे कंटेनर क्रिएट करया पे अमेज़न लिनक्स रो तन मु ये इमेज ता यूज कर परिबी ओके लेट्स यूज दिस वन मु चाहूँ यूज करया पे तो कौन करबी अमेज़न लिनक्स लेटेस्ट ओके मैं कौन कहूँ ना डायरेक्टली मु पुल न करी एटी गोटे भलो एग्जांपल तुमको बुझे दउछि डायरेक्टली मु एठी कौन करबी ना इमेज ता मते दरकार होस्ट को दरकार मु कौन करबी पुल करबी जदि मु एठी पुल न करूछि डायरेक्टली मु रन करी कंटेनर क्रिएट करिया को चाहूँ ठीक अछि docker कौन कमांड यूज करबी कंटेनर run -d ना गोटे दे दोछि अमेज़न लिनक्स एल दे देली अमेज़न लिनक्स ओके मतलब लिखि दोछि अमेज़न लिनक्स लिखि देली तो मते इमेज ता यूज करे अछि तो इमेज ना कोन हला अमेज़न लिनक्स अमेज़न लिनक्स तो लेटेस्ट वर्जन बाय डिफॉल्ट आसीबो एटा राइट तो मैं जतले यूज करी कौन हम से लेट्स सी एटा रन कले कौन हम ये तो मुझे बुझा को चाहूँ राइट एटा एंटर जस्ट ये पढ़ जहाँ आउटपुट दबो ये पढ़ से कौन कहूँ ना लेटेस्ट ऑब्वियसली मते किछि स्पेसिफाई करिनी एठी तो से कौन लेटेस्ट ही आनिबो राइट से कौन कला लेटेस्ट फास्ट कौन कला एई लाइन टा पढ़ो unable to find image Amazon Linux latest Amazon Linux latest कौन ला unable to find image locally माने होस्ट रे docker host रे राइट docker सर्वर रे फास्ट से सर्च करिवो इमेज किछि अछि ना नाही जदी नाही हमें कौन जदी कंटेनर रन कम जदी हमें कंटेनर डायरेक्ट क्रिएट करछे इमेज रु से फर्स्ट सर्च करिवो इमेज ता लोकली अछि ना नाही जदी नाही तापर कोन करिवो से पुल करिवो रजिस्ट्री जदी अछि देन it will not pull from registry again it will get it locally जेमति कि हमें पुराना कमांड जोडा हमें यूज करछे राइट कंटेनर क्रिएट कर देखो एटी जो हमें कंटेनर क्रिएट करले जे कंटेनर सब हमें क्रिएट करथिले राइट ये कंटेनर कौन ऑलरेडी अपाची सर्वर कौन थिला राइट तो सेति से कौन कला डायरेक्टली कंटेनर क्रिएट कर देला आउ
डाउनलोड फाउनलोड किछि कलानी रजिस्ट्री बट ए केस रे कोन हैला जेतु से फर्स्ट कोन लोकली खोजिला पाइलानी अनेबल टू फाइंड इमेज तापर से पुल कला परे जाइकरी कोन हैला कंटेनर गोटे क्रिएट कला तो आम एबे चेक करबा कौन इमेज आ कौन कंटेनर अच्छी डॉकर इमेज एलएस तो पर्टिकुलर अमेजन लिनक्स ये अपाची इमेजेस अच्छी आम डिलीट करने राइट दीटा थिला बट आम अमेजन लिनक्स वर्तमान इमेज टा कौन सी करला पुल करदेला आम एक्सटर्नली पुल करने आम कंटेनर क्रिएट कला बेले से ऑटोमेटिक पुल कला बट डाउनलोड कला कोडू रजिस्ट्री आम ए कंटेनर चेक करवा कंटेनर एलएस किछि नाइ जेहेतु आम एठी कौन गोटे अमेजन लिनक्स ता कौन एक्चुअली गोटे लाइनक्स मशीन टा राइट लाइनक्स इमेज टा से कौन देछि व्हाट इज आमले इज प्रोवाइडेड बाय AWS इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड ए स्टेबल सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशंस रनिंग अमेजन EC2 जोडे कि हमर अमेजन लिनक्स जो मशीन टा से सेटा दउछि तो ता पई एटा कौन रन हबनी कारण एटा कोनसी पोर्ट दरकार नै आ पई से ऑटोमेटिकली कौन हो तापे हमको किछि कमांड पास करि थांते सेति पई से कोन हला जस्ट क्रिएट हला तापर टर्मिनेट हो जाला तो मदि देखियो हाइफन ए देबी देखो कंटेनर आईडी क्रिएट ला इमेज अमेजन लिनक्स हमें ना देइतले तार अमेजन लिनक्स ए कैपिटल एल कैपिटल देइतले तो सही सर ना रहला पोर्ट किछि दरकार नै कारण एटा गोटे मशीन स्टा ता कमांड कोन एग्जीक्यूट होछि बिन पास एति मन रखि त मोठी गोटे खाली जस्ट कमांड क्रिएशंस कंटेनर क्रिएशन हम तुमको बतेदली बट ए कंटेनर को हमें केमिति यूज करिबा ता विषय रे तुमको बतेदेबी केमिति धर एटा लाइनस कमांड राइट मु चाहूची गोटे कंटेनर क्रिएट कला बेले आ गोटे कंटेनर दोची अमेजन लिनक्स ता ना दउनी कारण ना देले मत सब बेले चेंज करिया पड़िबो जेतो एटा यूनिक तो मु छाडी दउची से बाय रैंडमली से तार ना चूज करिवो मु एठी कोन करची रन कला बेले मु किछि कमांड एग्जीक्यूट करची सपोज राइट मु कोन कली सपोज pwd यूज कले ओके एटा एंटर किछि शो कलानी मु जदि एटे कोन करची bin bash pwd शो कलानी पर आम कंटेनर चेक करवा कौन तीन कंटेनर्स यूज अच्छी आ कौन कौन कमांड आम एग्जीक्यूट करथिले तार डिटेल से देखौ तार डिटेल से देखौ तो एठी शो काहे की कलानी एक्चुअली लेट्स एग्जीक्यूट अगेन बट दिस टाइम विल नॉट गिव -d ऑप्शन पे हमें डिटैच मोड इन हो हमें इंटरैक्टिव मोड रे रन करवा सी मते pwd माइले मते कोन देला pwd एग्जीक्यूट करिकि तार आउटपुट ता देखेला तो मैं तो -d ऑप्शन यूज करूथली से हम कमांड तो एग्जीक्यूट करूथला किंतु बैकएंड रे डिटैच मोड सेति में हमें कमांड ता आउटपुट देखि पानुथले खाली देखुथले कोन कंटेनर आईडी डिफरेंस बुझो राइट ये सब तमे जानिबो धीरे धीरे जतले प्रैक्टिस करिवो हठात गोटे दिन तोन मन पड़िबनी आ भाविबनी जे मते गोटे दिन रे मु सिखि जी ओके तो रूट चले तो मु किछि भी कमांड एग्जीक्यूट करिया पई चाहूची डेट जेतो एटा गोटे लाइनक्स कंटेनर राइट से कोन करूची ना मु तले कमांड ओके लेट मी एक्सप्लेन यू तो फर्स्ट कोन तले रन कली से कोन कला गोटे इमेज को कोडा अमेजन लिनक्स लेटेस्ट इमेज को रन करिवो रन कले कोन करिवो कंटेनर क्रिएट करिवो कंटेनर क्रिएट कला माने जो कंटेनर टा कोन हमर लाइट वेट देखो कितने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड रे हमर गोटे कंटेनर क्रिएट हो गोटे अमेजन मशीन गोटे क्रिएट हो तो कंटेनर गोटे मशीन ही होल्ड करूची एठी राइट तो मैं एठी अमेजन लिनक्स में अछि से कोन करना गोटे कंटेनर क्रिएट करूची गोटे एनवायरनमेंट क्रिएट करूची तापर डेट कमांड को एग्जीक्यूट करिवो एठी pwd यूज एग्जीक्यूट करतला एठी डेट एग्जीक्यूट करिवो राइट लेट्स सी देखो से कोन कला कंटेनर क्रिएट करी डेट कमांड एग्जीक्यूट कला तो डेट कंटेनर जहाँ अच्छी से डिस्प्ले कला
ओके तो ये हिसाब रे हमें कंटेनर बर्तमान आम जब चेक करबा केतरा कंटेनर बर्तमान आसीबणी तो सब जगह एग्जिटेड अराउंड 5 कंटेनर्स राइट तो ये हमें कौन कौन सब कमांड एग्जीक्यूट कर लास्ट कमांड कौन एग्जीक्यूट रही सब देखे दउछ बुझे पारलो आ विषय हमें बहुत डिटेल्स रे जानिबा तो मैं एबे खाली ओवरव्यू ऊपर कमांड एग्जीक्यूशंस दिखौची बहुत डिटेल्स रे ता भीतर को लाइनक्स मशीन भीतर को लॉगिन करिवा बहुत सारा डिटेल्स अछि राइट ता विषय हमें जानिबा तो एटा हला अमेजन लिनक्स ऊपर से पर तुम जे कोनसी इमेज चाहूछ के फर्स्ट इमेज विषय रे बुझीबा को चेष्टा करू इमेज ता कोन आ ताको हमें केमिति रन करिवा ओके फर्स्ट हमें गोटे इमेज जो क्रिएट करथिले राइट से जो इमेज हमें क्रिएट करथिले कोडा सॉरी नॉट इमेज क्रिएट करथिले हमें जो कंटेनर क्रिएट करथिले अपाची इमेज यूज करी एचटीटीपी इमेज यूज करी तो सेटा एचटीटीपी टा कोन गोटे अपाची सर्वर गोटे अपाची वेब सर्वर जोटा कि हमर किछि वेब एप्लीकेशन रन करबा पई हमें कोन यूज करू तो सेटा तो हमें केमिति एक्सेस करबा केमिति तक तो ता पई हम कोन करया पड़िबो यूज करछि डॉकर ओके कंटेनर -d -name सपोज वेब सर्वर इधर नाम दे दली तापर इमेज यूज करबा httpd लेटेस्ट इमेज यूज कली ओके फाइन सो एठी ये कौन करिवो ना वेब सर्वर अपाची इमेज अगेन क्रिएट कर दो बट कनेक्ट हबनी कोन हबो से रन हबो बट हमें कनेक्ट करि परिबानी तो अपाची सर्वर रो डिफॉल्ट पोर्ट हला कोन 80 से अपाची सर्वर को हमको कनेक्ट करबा को हेले कौन करिया पड़िबो ना कंटेनर रो पोर्ट को ओके तो हमको क्वेश्चंस आसीबो हाउ वी कैन कनेक्ट to the container web container okay तो बेसिकली हमें कौन देखिबा जदि कोनसी वेब कंटेनर हमें कनेक्ट करछि सपोज अपाची वेब सर्वर को कनेक्ट करबा तो हमें जानछे कोन अपाची वेब सर्वर डिफॉल्ट पोर्ट कोन 80 राइट तो हमें कौन करबा ना ए 80 पोर्ट ता ओके ए पोर्ट ता कोन सपोज कंटेनर पोर्ट एटा गोटे ओके कंटेनर पोर्ट आसला कोन 80 तो ये कंटेनर ता हमर कोन गोटे सर्वर भीतर अछि गोटे सर्वर भीतर अछि तो आकू हम लैपटॉप रो हमें कनेक्ट करिवा बा सिस्टम रो हमें कनेक्ट करिवा केमिति कनेक्ट करिवा जेतु एटा गोटे सर्वर भीतर हमर कंटेनर टा अछि और एटा हला सपोज हमर कोन अपाची कंटेनर httpd कंटेनर बा अपाची वेब सर्वर डाला हमर अपाची वेब सर्वर केमिति कनेक्ट करिवा ना एक कंटेनर टा जेतु कंटेनर टा सिक्योरली का भीतर सर्वर भीतर अछि हमें सर्वर भीतर आकु देले तो फर्स्ट हमें कोन करिवा ना सर्वर आईपी एड्रेस आनिबा सर्वर आईपी एड्रेस आनला परे हमें कंटेनर को कनेक्ट करिवा राइट तो कंटेनर को तो कनेक्ट करिवा बट कंटेनर पोर्ट कोन बाहर को विजिबल नहीं इट्स नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइड तो ताको कोन करिया पड़िबो ना हमें कोन करिवा कंटेनर पोर्ट को पब्लिश करिकरी होस्ट पोर्ट को एक्सेस दबा कागु 80 कि तमे जे कोन सी 80 80 80 एक जहा भी गोटे पोर्ट नहीं गलो एटाला कोन हमरो कंटेनर पोर्ट दिस इज कॉल्ड कंटेनर पोर्ट डिफॉल्ट हला आसपाची रो कोन 80 आ गोटे 80 मु पोर्ट ताको पब्लिश कर देली एटा हमरो कोन हबो ना आकु को आजिबो होस्ट पोर्ट तो एटी होस्ट किए ना एटा ए सर्वर टा हमरो होस्ट ए सर्वर टा हमरो हला होस्ट तो
कंटेनर पोर्ट को ए होस्ट पोर्ट सहित पब्लिश करिया को पड़ियो तो ये तुम जेकोसी पोर्ट नंबर दे पारे मुझे एग्जांपल हिसाब से 80 सेम पोर्ट नहीं जाइए तो तुम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस रे डिफरेंट पोर्ट रे भी मैं तुमको बतई देबी ठीक अच्छे तो कंटेनर पोर्ट को बर्तमान पब्लिश करिया को पड़ियो होस्ट पोर्ट सहित देन ओनली वी कैन कनेक्ट फ्रॉम आवर लैपटॉप तो ट्राई करिया केमती करिया तो ये जो कमांड आम एग्जीक्यूट करूले एटी कौन आम कि पोर्ट दे नथिले पब्लिश कर नथिले तो तापाई कौन करिया पड़ियो एटी आ गोटे ऑप्शन यूज करबा हाइफेन पी कंटेनर पोर्ट हैला केते 80 ताकू पब्लिश करबा होस्ट पोर्ट को 80 तो वर्तमान हमर कंटेनर पोर्ट आ होस्ट पोर्ट पब्लिश हो गला तो हम हिट एंटर किछ भूल लिखाला सेते पे यूज हेलन ओके एटी कोन मु कंटेनर पर कोन रन मारिली देखो तो रन करियर अछि ना कंटेनर रन करियर अछि तो मते रन कमांड मु लिखे भूल जाइतलो तो रन डॉकर कंटेनर रन हाइफेन डी हाइफेन हाइफेन नेम कंटेनर देन पब्लिश कली देन इमेज नेम राइट हिट एंटर देखो हमारा कंटेनर क्रिएट हो गला राइट नाउ लेट्स चेक सी ये कंटेंट हमर क्रिएट होला तो मु वर्तमान एलएस हाइफेन ए न मारी करी खाली एलएस मारुची देखो हमर कंटेनर रेडी इधर कौन ऑफ अच्छी 27 अच्छा बट स्टिल ऑफ इट्स नॉट एग्जिटेड आउ एठी देखो पोर्ट चेंज हे कौन ये पोर्ट टा फॉरवर्ड हे कौन होस्ट पोर्ट टा फॉरवर्ड हे एटीपी को कनेक्ट करिछि राइट तमने हमें कंटेनर पोर्ट को पब्लिश करिचे होस्ट पोर्ट सहित कनेक्ट हे एटा पोर्ट फॉरवर्डिंग कोंती ला बा पोर्ट पब्लिशिंग कोंती पब्लिश करियो बा पोर्ट फॉरवर्डिंग तो पोर्ट टा होस्ट पोर्ट टा फॉरवर्ड हे कंटेनर पोर्ट को नेम है वेब सर्वर ओके तो बर्तमान तो कंटेनर रन हो बट ये कंटेनर को हमें कनेक्ट केमती करबा जेहेतु एटा गोटे वेब कंटेनर राइट वेब सर्वर तो हम कंटेनर बर्तमान कौन होल्ड करछि what it contains the container now contains the apache server apache application hold करछि राइट तो से apache application बा apache server कनेक्ट कन करिया ना सही सर्वर रा हमरो कोन आईपी एड्रेस दरकार जोटा जोठी हमर डॉकर सर्वर अछि राइट जोठी हमर कंटेनर रन होची तारा आईपी एड्रेस दरकार आईपी एड्रेस आनले टेस्ट आईपी एड्रेस हिट एंटर सी सेठी वर्तमान कोन होची हम एटा एक्सेस करी पारुना so what could be the problem हमें चेक करिया तर प्रॉब्लम कोन काहे हमें कनेक्ट करि पाउने तो आर फर्स्ट मु चेक कर दोची नेटवर्किंग ता हमें कोन नॉट नेटवर्किंग हमें सिक्योरिटी ओके सिक्योरिटी ग्रुप कोन जेनकिंस हा पोर्ट कोन 80 तो अच्छी तो पोर्ट फॉरवर्डिंग रे 80 काम करबा कथा बट 80 काम करिनी लेट्स चेक okay so let's see why it's not working ता troubleshoot करिबा हमें container ls run तो होची container apache server we should able to access it but still not working okay तो ताको troubleshoot करिया पई हमें किछि troubleshoot command जानिबा first हमें तो publish कले but still it is not working तो हमें कौन command यूज करथले पाउथरे चेक कर दबा हिंदी -p 8080 अच्छी ठीक अच्छी तो रन हवा कथा बट हमें एक्सेस करी पारो नहीं राइट सो लेट्स सी ओके एटी कौन दोची प्रॉब्लम दोची द साइट कैन नॉट बी reached
the site cannot be reached, connection timed out. The connection timed out different problem type रे गोटे हला कोन हमर firewall हमें देखले firewall हमें ओपन करिचे पोर्ट हमर 80 ओपन अछि तापर बता हमें कनेक्ट करिवा कोन कंटेनर को तो बटन कंटेनर अछि हमर रन होची तो बटन हम कंटेनर भीतर को पसिबा will go inside the container तो ता पई कोन यूज करिवा docker container okay exec तुम्हें जानी पारन कौन कौन तो हेल्प मारिबो जब हम कहूची हेल्प मारिबो एटी एक्सिक कमांड गोटे अछि एक्सिक्यूट ए कमांड इन ए रनिंग कंटेनर तो रनिंग कंटेनर भीतर रन कर तो मैं ये एक्सिक कमांड यूज करबी ओके कौन करबी कंटेनर एक्सिक हाइफेन आईटी एठी मते इंटरएक्टिवली कनेक्ट करिया पड़िबो राइट मते जेतु कमांड एक्जिक्यूट करबो सेति में मु इंटरएक्टिव मोड दली हाइफेन आईटी तापर मते सही कंटेनर को कनेक्ट करबी एक्सिक हाइफेन आईटी सेटु कंटेनर ना सपोज कंटेनर ना बा कंटेनर आईडी तमे देई परिबो वेब सर्वर तापर गोटे कमांड यूज कर एक्जिक्यूट करियो मु सपोज bin bash बा खाली bash कमांड देखो वर्तमान कोन मु कंटेनर भीतर को पसी गली वर्तमान मु आ होस्ट मशीन एटा कोन होस्ट मशीन रे थिली राइट EC2 यूजर वर्तमान कंटेनर आईडी देखो root@ कंटेनर आईडी आउ तार रूट डायरेक्टरी बा वर्किंग डायरेक्टरी मु अछि वर्किंग डायरेक्टरी विषय हम परे पढिबा वर्किंग डायरेक्टरी अछि तो मेटी यदि ls-lrt मारिबा देखो एटला हमर कंप्लीट वर्किंग डायरेक्टरी राइट htdocs मु चेक करबी cd htdocs index.html फाइल अछि राइट ए index.html फाइल का हमर एटी एक्चुअली रन ओपन करे कथा ता पूर्व मु चेक कर दोची देखिबा जो अपाची सर्वर ता रन होची कि नाही तो हम जदी सिस्टम ctl status ओके सिस्टम ctl ओके ऑब्वियसली कमांड फाउंड होबनी कारण एटा केवल लिनक्स मशीन एटा नो राइट एटा केवल अपाची सर्वर गोटे ता भीतर हमें ए कमांड एग्जीक्यूट करि परिबा नाही दैट इज रॉन्ग तो बेसिकली हमरो सर्वर टा जेतो run होची we should able to connect it right but we are not able to connect something wrong okay let me come out from this container जेतो container run होची हमें okay fine तो वर्तमान मु कोन करछि से कंटेनर रो लॉग चेक करी हमें तो गोटे देखले एग्जीक्यूट करी पसले हमर इंडेक्स फाइल अछि कंटेनर सब रेडी अछि राइट तमे बे कंटेनर लॉग चेक करिवा तो सेटा हमर ट्रबल शूटिंग कमांड रे जाउछि ओके मुझे डॉकर कंटेनर ls मारछि कंटेनर हमर स्टिल रन होछि बेसिकली हमें कनेक्ट करि परिया कथा राइट जेतु वेब सर्वर हमर कोन वेब रु कनेक्ट करिया कथा तो परफेक्ट दोछि तो एटा ही हमर राइट IP address चेक करिबा 133 110 133 110 1133 ठीक अछि किछ प्रॉब्लम नहीं तमे कोन करिबा :80 दबा ओके एकी प्रॉब्लम आसला मतलब कॉपी पेस्ट करली देखिलो हमरा एक्चुअली प्रॉब्लम आ को ने हमें ट्रबल शूट करिवार लागि जे बट मेन प्रॉब्लम एक्चुअली एठी अछि एटा हमरो नॉर्मल https नो सती पई से एस नहीं अछि तो एठी डिटेल्स रे हम देखौनी किछि तो प्रॉब्लम असला मु https ता हटाई देली एटा एंटर देखो काम कला त माने हमर जो कंटेनर रन होउची राइट तमे किछि ट्रबल शूट कर सरे बट मन रखि दाओ एठी तमे यदि डबल क्लिक करिबा नॉर्मली एठी कंट्रोल सी बा कोन करिवो एठी कोन आसी जो http आसिया कथा राइट त हमर https थिला जोडा भी आसनतला एठी इट वर्क्स त माने जो कोन हमें कनेक्ट करथिले राइट कोडी की कंटेनर भीतर को आउथर लेट्स गो इनसाइड द कंटेनर अगेन कंटेनर भीतर गली तो एठी हमर पाथ कोन होची cd htdocs जोडा कि हमर कोन
कंटेनर रो अपाची सर्वर रूट डायरेक्टरी जो हमर इंडेक्स फाइल रोए तो मैं यदि इंडेक्स फाइल तक चेक करी राइट cat index.html मारिया देखो ये पर्टिकुलर html तादर अछि it works तो सेति पे एटी हमर देखो जी कोन it works तो मोदी किछि गोटे काम करछि मु एठू कम आउट हे जाउछि पळे आछि मु कोन करबी हमर गोटे इंडेक्स फाइल क्रिएट कर दवा क्विकली इंडेक्स फाइल index.html ओके बहुत जल्दी जल्दी कर दो लेट लाइन राइट html लिख दीजिए हेलो डॉक्टर action tag ओके बट सिंपल html फाइल मु लिख दिली सेव करछि ओके मु वर्तमान html फाइल ता लिखिली कोठी ना डॉकर मशीन रे राइट डॉकर होस्ट रे मु लिखिछि ए फाइल ता किंतु कंटेनर अवेलेबल नै मोदी कंटेनर एठी रिफ्रेश करबी कोन कंटेनर रे एटा अवेलेबल नै कंटेनर पूर्ण इंडेक्स फाइल इट वर्क्स अछि तो मु वर्तमान रनिंग कंटेनर ता को कॉपी केम करबी फाइल ता को तार एक कमांड अछि कोन कमांड इज डॉकर कंटेनर राइट कॉपी ओके कौन कॉपी करबी इंडेक्स फाइल टाको कॉपी करबी index.html तापर वर्तमान कौन करबी ना कंटेनर आईडी देबी को कंटेनर को कॉपी करियर अछि राइट कंटेनर आईडी तापर कोन कंटेनर पाथ जोठी के हमको @ ना इट डायरेक्ट कोलन नबो बोले ट्राई करते कोलन दबा डायरेक्ट ओके कंटेनर आईडी ए कंटेनर को कॉपी करबी राइट ए पर्टिकुलर पाथ को हिट एंटर डॉकर कंटेनर सॉरी नॉट कॉपी इट्स cp it's my mistake it's not I just wrote it copy there is a type so it should be cp okay तो हमें कौन करबा cp command यूज करबा मन रखते एटा क्वेश्चंस भी आसी पारे cp how to copy a file to a container okay से कौन लिखला successfully copied file to this path ए पाथ को फाइल कॉपी हे गला cp कमांड यूज करी हमें फाइल ता कॉपी कर देले लाइनक्स रे जो cp कमांड एटी में हमें cp यूज कर परिबा राइट तो बर्तमान मटी रिफ्रेश करिबी सी हमें कंप्लीट डॉकर विषय किछि जानिले राइट कंटेनर केमती क्रिएट करे इमेज सो इमेज जहां भी हमें सब यूज करतले कोन इनबिल्ट इमेज डॉकर हब वर्तमान डॉकर हब रे तमे अकाउंट गोटे क्रिएट करिथा बट डॉकर हब रा अकाउंट यूसेज ता हमें वर्तमान करिबानी हमें यूसेज ता तो डॉकर हमें इमेज निजर इमेज क्रिएट करिबा बिल्ड करिबा सेतबळे हमें ताकू केमती स्टोर करिबा ता विषय जानिबा तो वर्तमान हमें केवल कंटेनर क्रिएशंस विषय किछि दिन जानिबा माने गोटे दुटा क्लासेस तापर हमें इमेज क्रिएशन सिखिबा ओके तो वर्तमान हमें कोन होला ना जति कि पब्लिक इमेज तला तारी ऊपर आज काम कले कंटेनर हमें क्रिएट कले इमेज डाउनलोड कले कंटेनर क्रिएट कले राइट तो दीटा कंटेनर गोटे लाइनक्स कंटेनर ऊपर देखिले आ गोटे अपाची कंटेनर देखिले अपाची कंटेनर रन करूची जोटा कि ताके केमती एक्सेस करबा कंटेनर भीतर केमती पसिबा exit marikini right so that is troubleshooting command right the questions as well how to go inside a container what is the command to go inside a container you can say docker container exec -it then container id right तो तार log check करिया पई कहि दोची
तो ये जो कंटेनर बर्तमान रन होची राइट चेक करिया डॉकर कंटेनर प्लस ये जो कंटेनर टा रन होची तार लॉग्स चेक करिया पे हम कोन कर परिया डॉकर कंटेनर देखो आर कोन थिवो logs पड़ला logs right fetch the logs of a container fetch the logs of a container तो हमें कौन करिवा हमें दी docker container logs और container id sorry container id ता container ना दे दवा मो container id तो मन नहीं मु container ना दे देबी web server देखो तो पूरा log से सोचना अरे एतिक log ही अच्छी अरे एतिक log से सोचना राइट तो सही हिसाब रे तमरा जदि मु चाहूची लॉग टा कांस्टेंटली फ्लो करिया पे देन हमें यूज करिवा logs -f option to display the logs सी अटैच है कि रहिला राइट एति की वर्तमान शो करूची राइट मु गोटे काम करची मु एटा रिफ्रेश करूची जते थोड़ा रिफ्रेश करबी से सेते थोड़ा एटी क्रिएट करबो देखो राइट तो लॉग्स टा बॉडी बॉडी चलेला -f option रे तो ट्रबल शूटिंग कमांड्स में एटा यूज हुए तो हिसाब से हमें यूज करियो तो क्वेश्चन भी पचा हाउ टू चेक द कंटेनर लॉग्स राइट तो हमर कंटेनर बर्तमान कोन हला रन होची तो मु चाहूची कंटेनर को स्टॉप करिया पे हमें कोन कमांड यूज करथले कंटेनर स्टॉप वेब सर्वर तो कोन करियो कंटेनर को स्टॉप कर दो बर्तमान हमें चेक करिवा देखो किछि कंटेनर नहीं स्टॉप हे गला तो मु चाहूची तो स्टार्ट करिया पे कोन कमांड करिवी स्टार्ट एबे चेक करिवा देखो संग स्टार्ट हेला विदिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड दैट्स व्हाई कंटेनर्स आर लाइट वेट राइट इमीडिएटली विदिन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड रे गोटे हमरा एप्लीकेशन को हमें रन कर देले फाइन तो एबे मु कोन चाहूची बुझि पालो तमर कंटेनर कोन रन हे गला तो मु वर्तमान आकु टर्मिनेट करिया पे चाहूची देखो तार कौन सब कमांड्स दिला किल वन और मोर रनिंग कमांड तो किछि किल करिया पे चाहूचो किल करि पारिबो ओके किछि गोटे स्टेटस देखिया पे चाहूचो कंटेनर रो स्टेट्स कमांड स्टॉप करिया पे चाहूचो स्टॉप कमांड तापर प्रोसेस कौन कौन रन होची चेक कर पारिबो राइट ये सब कमांड्स हमें किछिटा कमांड आ विषय जानले आउरी इंस्पेक्ट कमांड ए सब विषय अछि हमें ए सब कोन आदर किछिटा कमांड जोटा इंस्पेक्ट लॉग्स एग्जिक राइट आउ स्टॉप ए सब कोन स्टार्ट टॉप ए सब वाला ट्रबल शूटिंग कमांड्स माजे तो मैनेजमेंट कमांड्स हम सब जाक कोन जाना हमें कोन अटैच कमिट क्रिएट ये सब कमिट हला हमें जतले नुवा किसी गोटे कमिट करे इमेज क्रिएट करे क्रिएट ए न्यू इमेज फ्रॉम द कंटेनर